वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एचएमपी शंट, जिसको हम पीपीपी यानी कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है। देखो मैंने ये आपको आंसर बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो एचएमपी शंट होता है उसको क्या बोला जाता है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बोला जाता है, ठीक है। सेम मेटाबॉलिक पाथवे है ये, बस इनके नाम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एचएमपी पाथवे इज़ टू प्रोड्यूस। जो प्राइमरी फंक्शन होता है एचएमपी पाथवे का, वो क्या प्रोड्यूस करना होता है, एटीपी एंड लैक्टेट। ऑप्शन बी एनएडीपीएच एंड राइबोस 5 फॉस्फेट। ऑप्शन सी पायरुवेट एंड एटीपी। ऑप्शन डी एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Try to answer it in your comment section given below. I hope you have answered it. Now try to match it with my answer. The correct answer is B. NADPH and ribose 5 phosphate. NADPH यूज़ किया जाता है रिडक्टिव बायोसिंथेसिस के लिए एंड एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस के लिए, वाइल राइबोस 5 फॉस्फेट जो होता है उसकी ज़रूरत होती है न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ द एचएमपी पाथवे इज। ऑप्शन ए हेक्सोकाइनेज। ऑप्शन बी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ऑप्शन सी फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। ऑप्शन डी पायरुवेट काइनेज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज G6PD। ये क्या करता है, फर्स्ट एंड रेट लिमिटिंग स्टेप जो होता है ऑक्सीडेटिव फेज का, उसको यहाँ पे ये कोज करता है, मतलब एचएमपी पाथवे में। नेक्स्ट है विच कोएंजाइम इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ द एचएमपी पाथवे। NADH, FADH2, NADPH, ATP। सो द करेक्ट आंसर इज NADPH। दो मोलिक्यूल होते हैं NADPH के, जो एक मोलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के, जो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब हमारा आगे फर्दर मॉलिक्यूल्स बनाता है तो वो दो मॉलिक्यूल NADPH के जनरेट करता है। नेक्स्ट है NADPH प्रोड्यूस्ड बाय द HMP पाथवे इज एसेंशियल फॉर। ऑप्शन ए मसल कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन बी फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ऑप्शन सी ग्लाइकोलाइसिस। ऑप्शन डी यूरिया फॉर्मेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। NADPH provides reducing power for anabolic reactions and detoxification. That's why it is produced by HMP pathway and it is essential for fatty acid and cholesterol synthesis. Next question is question number 6. Which of the following cells have the highest activity of the HMP pathway? Option A skeletal muscle. Option B red blood cells. Option C cardiac muscles. Option D bone cells. So the correct answer is option B red blood cells. Red blood cells require NADPH to maintain reduced glutathione and protect against oxidative damage. Question number 7 is ribose 5 phosphate produced in the HMP pathway is mainly used for the synthesis of option A proteins, option B fatty acids, option C nucleotides and nucleic acids, option D glycogen. So the correct answer is nucleotides and nucleic acids. Ribose 5 phosphate is a precursor for DNA and RNA, ATP and other nucleotides. The next question is question number 8, which says which vitamin is indirectly associated with the HMP pathway through the coenzyme NADP positive. So our options are option A vitamin B1 that is thiamine, vitamin B2 riboflavin, option C vitamin B3 niacin, option D vitamin B12 cobalamine. So correct answer is option C vitamin B3 that is niacin. NADP positive is synthesized from niacin that is vitamin B3. Next is deficiency of G6PD mainly affects which cells?
Option A, liver cells. Option B, kidney cells. Option C, red blood cells. Option D, neurons. So the correct answer is red blood cells. Red blood cells rely entirely on the HMP pathway for NADPH production, making them highly susceptible to oxidative stress. Next question is, which statement about the HMP pathway is true? Option A, it directly produces ATP. Option B, it occurs only in mitochondria. Option C, it produces NADPH and ribose 5-phosphate. Option D, it converts pyruvate into acetyl coenzyme A. So the correct answer is, it produces NADPH and ribose 5-phosphate. The HMP pathway occurs in the cytosol of a cell and it generates NADPH and ribose 5-phosphate, but it does not produce ATP. That's why it is different from glycolysis. And these are our 10 questions which we wanted to do to practice our HMP pathway. So we will meet in next lecture where we are going to discuss some MCQ related to protein, means the structure of amino acid. So stay tuned with me and take care of yourself.